हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। हिम्मत का एक कदम बढ़ा,
Om Shanti. Am I audible, Sister Susan? I can't hear you. Can you check? Yeah. Can you hear me now? Yes, I can hear Okay. you. Because just now it was mute. Okay. Welcome, Om Shanti. Welcome to a northeast state of India called Orissa, and that's in Bhubaneswar. And this is a place called as Patia. A very beautiful Baba's home, very loving children, very nice family. And these days there are so many IT companies are being established, so much IT services also the center is doing. So welcome to that part of Baba's service in India, and so happy to have you. Thanks for saying yes in just one request, and definitely we all will take benefit of your experience today. And we have Sister Gulab, who is a center in charge for that center. She will also welcome you. Okay. दीदी वेलकम कीजिए उनको. She speak English? And now I'll translate that for you. You will translate. Okay. Yeah. How do I her name again, sister? Gulab. Gulab. Yeah. Sister Gulab. Yes. Yeah. Okay. Om Shanti. Gulaben. Om Shanti. आज हमारा ये सौभाग्य है हमारे बीच में आदरणीय मिठी राजयोगिनी सुसन देवी, तो बहुत बड़ा तो वक्ता है। तो मलेशिया में वो समर्पित होके सेवा दे रहे हैं, फिर सारी विदेश में सेवा भी अच्छी तरह संभाल रहे हैं, और एशिया रिट्रीट सेंटर में भी दीदी बहुत सेवा भी दे रही हैं। तो हमारा आज ये सौभाग्य है दीदी हमारी बीच में तो आए हैं, और हम सारे जो अचानक एवरडी का सेवा देने के लिए विदेश से देश भारत में आज ये उड़ीसा भुवनेश्वर के छोटे छोटे नाना से बच्चे को तो सेवा देने के लिए तो इतना तैयार हुए और अचानक में आई। इसलिए मेरी तरफ से बाबा दादा की तरफ से ये परिवार की तरफ से तो प्यारी मीठी सुसन दीदी को मेरी तरफ से स्वागतम स्वागतम स्वागतम। So she is very happy today to have you and feeling very fortunate, and she introduced you that you do service in Asia Retreat Center in Malaysia and all. And she is very happy, and within a very short notice you have accepted the request, so they are more happy for that. And they have welcomed you to Bhubaneswar, Orissa, to their center, to their family. Okay, thank you. Is this the first time that you or you have invited also other foreign? Yeah, as a double foreigner, you are the first one. Oh, I'm the fortunate one. Yeah. So happy to serve Bharat. ओके, डबल विदेशी के हिसाब से पहली सिस्टर सुसन को हमने इनवाइट किया है। उनको भी बहुत खुशी है इस बात की कि भारत की भी सेवा वो करेंगे। या साथ भी थोड़ा सा अपने का अनुभव शेयर करना। हाँ जी, और एक्सपीरियंस सुनाने से भी और खुशी हमको भी लगे और सारे अपना को भी अच्छा लग जाए। मेरी तरफ से दीदी को भी और एक बार स्वागतम स्वागतम स्वागतम। So she is welcoming you again and again. They are so happy to have you, and she is also welcoming you to Bhubaneswar when you come to India. Yeah. Yeah. We have some visitors from Orissa. I couldn't recall the name. They have been to Asia Retreat Center from Orissa. Okay. सिस्टर सुसन जो है, जो बाबा का बहुत ही ब्यूटीफुल एशिया रिट्रीट सेंटर है मलेशिया में, वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। आप वैसे अकाउंटेंट है आपका जो प्रोफेशन है, बाकी आप पब्लिक प्रोग्राम्स भी करते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कॉरपोरेट्स में, मेडिटेशन कोर्सेस आदि कराते हैं, बीके इनर लीडरशिप ट्रेनिंग, एंगर मैनेजमेंट का भी कोर्सेस आप कराते हैं। एक बहुत विशेष प्रोग्राम चलता है विदेश में, 4 फेसेस ऑफ वुमेन वर्कशॉप करके, उसमें भी आप इन्वॉल्व हैं। और ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, पुसाद सेरेंटी, ऐसे अलग अलग
प्लेसेस में आपने मेडिटेशन सिखाया है और आप प्रोग्राम रिट्रीट एडमिनिस्ट्रेटर है एशिया रिट्रीट सेंटर में। माना वहाँ हाउ मेनी रिट्रीट्स माइट हैपन इन एन ईयर सिस्टर सुसन इन वारसी? In a year, about 50. लगभग 50, 50 से 60 जितने रिट्रीट एशिया रिट्रीट सेंटर में होते हैं। तो उस पूरे रिट्रीट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन है, सबको जवाब देना है, कितने आएंगे, क्या आएंगे, कहाँ आएंगे, सब कुछ आप वहाँ पर संभालते हैं। हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम निमित्त रिट्रीट टीम के भी हम साथ में सेवाएं करते हैं मधुबन में। तो मोस्ट वेलकम। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी टू हैव यू। Oh, thank you. Thank you. Yeah. If possible, at the end we can show the retreat center photo, no, if you have on the computer. Otherwise, I'll try from here if I can. Maybe later, later. Yeah, okay. Because so that we have more time. Yeah, we can So shall I start the Murli now? Yes, yeah. Yes. Actually, we can't see your full face. Can you? Oh. This is better. Yeah. Okay. This is Okay. Better. Yeah, this is better. Since how many years you are surrendered, Sister Susan? Since beginning of ARC, that means 2014. 2014. I'm surrender. But even before I live in the center, I'm almost like surrender. It's just I don't live in the center because it was a brother center where I always go to. Okay. पिछले लगभग 8 साल से फुल टाइम रिट्रीट सेंटर में सेवाएं करते हैं। उससे पहले भी बहुत सेवाएं करते थे कि सेंटर के कनेक्शन में रह करके, लेकिन फुल सरेंडर नहीं थे क्योंकि भाई भाई रहते थे उस सेंटर पर। अभी तो इनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। एशिया रिट्रीट सेंटर बहुत बड़ा है, बहुत सेवाएं करते हैं और मीरा दीदी वहाँ पर है तो उनके साथ रहते हैं। आप सब जानते होंगे मलेशिया की मीरा दीदी को, उनके साथ आप रहते हैं। ओके, So shall I start now? Yes. Yes. Okay. So today we shall share some of the main Murli points for today's Murli, 16 September. In the essence, Baba says, sweet children, the Father has come to remove everyone's sorrow and give them happiness. बाबा आए हैं सबका दुख दूर करके सबको सुख देने के लिए, इसलिए and therefore, since you are the children of the remover of sorrow, you mustn't cause anyone sorrow. आप दुखहर्ता के बच्चे हैं, इसीलिए आपका काम है किसी को दुख नहीं देना है। So that's why Baba today is reminding us that he is the bestower of happiness, remover of sorrow. So as his children, we should be like him, give happiness and not to cause any sorrow to anyone. हम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं, इसलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये आज की मुरली में बाबा ने कहा है। So the questions today is, what are the main signs of the children who are to claim an elevated status? What are the main signs of the children who are to claim an elevated status? ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? There are 6 points. Maybe you want to note it now so that you can revise later and keep this as your aim to achieve an elevated status. टोटल 6 बातें बाबा ने सुनाई है ऊंच पद पाने के लिए क्या निशानी होनी चाहिए। तो सिस्टर बता रहे हैं कि आप पेन एंड पेपर लेकर के लिखिए जरूर, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। सुसन दीदी का थोड़ा सा चेहरा पूरा आना चाहिए। या लिटिल योर फेस ना cannot see. Yeah. Because I have only a small camera, that's why I couldn't see myself here also. It was, I think, another symbol covering. Because it is live on the YouTube and on the Zoom, and also it will go on YouTube later and many people will see. I see. So now okay? Are you okay with? Yeah, this much is okay. Okay. So there are 6 points that we have to, the main signs of the children who claim a high, elevated status. Number 1, they always follow Srimad. Srimad point है, वे हमेशा श्रीमत पर चलते रहेंगे। Yeah. So they know what is Srimad, the elevated directions of God, Baba's directions. So they always, not sometimes, but always follow Srimad. This is point number 1. Number 2, they are never stubborn about anything. वे कभी भी हट नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे कि मैं ही राइट हूँ। Yeah, they are never stubborn about anything. And number 3, they study by themselves and gallop ahead to give themselves a tilak of sovereignty. Meaning to say they take initiative.
They don't wait for people to call them, to remind them, and they themselves will make that effort. And not only that, they never think that, oh, maybe I come so late, I may not able to go ahead. They never think that. They always move ahead and then give themselves the tilak of sovereignty. अपने आप को खुद राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, ये नहीं सोचेंगे दूसरा कोई कहे तो मैं करूंगी, खुद इनिशिएटिव लेकर के पुरुषार्थ करेंगे. And number 4, they never cause themselves a loss. या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कभी अपने आप को घाटा नहीं डालेंगे. And they know that whatever they are doing now, they are accumulating for the future 21 birth. And they know that what they are doing now, cycle after cycle, they will do the same. So it is not only the loss for this cycle, it will be cycle after cycle. So they will never cause themselves a loss. वो कभी अपने आप को घाटा नहीं डालेंगे, अपने पर अटेंशन रख करके अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे. And number 5, they are merciful and benevolent to everyone. They always feel mercy for everyone, always have the feeling that they want to benefit everyone. Whatever that they have received, they also want to share with others and also let others to receive the same benefit as they are. वो सर्व प्रति रहम दिल होंगे, कल्याणकारी बनेंगे. जो भी बाबा सुनाते हैं प्राप्तियां होती है, वो प्राप्तियों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे. ये इम्पोर्टेंट बात है. So that's why they are very interested in doing service. इसीलिए उनमें सेवा करने का बहुत ही इंटरेस्ट होगा. Means wherever they have an opportunity, they will actually share the knowledge, they share their virtues, share their power, and they will encourage, inspire others to be like them. इसीलिए वो खुद भी सेवा करेंगे और दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे सेवा करने के लिए, और हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे. Okay, number 6, they do not perform any degraded act. Degraded means that any act that under the influence of the vices, they don't never do anything which is degraded, and they do not fight or quarrel. वो कभी भी तुच्छ काम, माना जो नीचा काम होता है, विकारों के वश होकर के काम होता है, वो नहीं करेंगे, और कभी भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे. Before we come into knowledge, why we fight is because we don't know who we are. But now Baba has awakened us and says, now we know we are actually souls, and every one of us, we are souls and we are brothers. So we should live together like milk and sugar. So never fight and quarrel. It is only those who are orphan, meaning to say they do not know their parents, and they will fight with one another. हम ज्ञान समझने से पहले इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि हम ये भूल गए हैं एक पिता के हम बच्चे हैं, तो इसीलिए हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं. बाबा ने हमको ज्ञान दे दिया है कि आप आत्मा हो, सभी हम आत्माएं हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हम नहीं करेंगे. So I just conclude on these 6 points. Number 1, they always follow Srimad. They never stubborn about anything, and they study by themselves. They take initiative, gallop ahead, and give themselves a tila of sovereignty. They never cause themselves a loss. They are merciful and benevolent to everyone, so they are interested to do service, and they do not perform any degraded act, and they do not fight or quarrel. So these are the 6 main signs of the children who are to claim an elevated status in golden age. जो सत्युग में उच्च पद पाने के लिए बाबा ने निशानी सुनाई, सदा श्रीमत पर चलना है, राज तिलक देनी है, घाटा नहीं डालना है, सर्वप्रति रहम दिल कल्याणकारी बनना है, सर्विस का उनको बहुत शौक रहेगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं. And then today Baba gives 2 points for us to keep to put into practice. We call it essence for dana. Number 1, Baba says that remain very simple and ordinary at this confluence age, because this is the time to remain in exile, because this is time that we are preparing ourselves. We are going home. We are going back to the soul world. So keep ourselves very simple, our life very simple, ordinary, especially this time, the confluence age where we souls meet the supreme souls. Don't have any expectation here. Don't have any expectation here, and never take the law into your own hands. Never fight or quarrel. तो धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा ने कहा है, संगम पर बहुत सिंपल और साधारण रहना है,
क्योंकि वनवाह में रहने का समय है, यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। So in today's movie, actually, Baba says that some children they want some good shoes, even shoes they want to buy a branded or imported shoes. They think that something that from overseas will definitely be better. Probably is it can last longer, or they feel that it's nicer than the locally manufactured shoes. Baba even says that to that extent we shouldn't have that kind of thoughts that we want to get something which is very nice, expensive. And he said that you must remember now is this time for us to prepare ourselves to go return home. So keep everything very simple. Of course, simple doesn't mean that we have to live like a beggar, which even the dress you keep wearing. Some people say, oh, even I have a patch here, it's okay. Not to that extent. Just simple, but not too much, so that our intellect is focused on remembering Baba, the study, and our effort. माना बाबा ने कहा है कि अभी किसी किसी को बहुत इच्छा होती है ना, वही ब्रांडेड शूज ही हमको पहनना है, वही चीजें हमको यूज करना है, कॉस्टली कॉस्टली चीजें, हम एक्सपेंसिव चीजें यूज करें। तो बाबा ने कहा कि एकदम नीचा भी नहीं रहना है, एकदम ऊंच भी नहीं रहना है, बीच का जो लेवल का जो लाइफ है उसको हमको फॉलो करनी है अभी संगम के टाइम पे। That's why in Brahma Kumaris, when we wear white, right, it is also a sign of simplicity. We don't have to worry about choosing what type of design, what fashion and all that. We just keep ourselves very simple. We just wear white. It saves a lot of time, also save a lot of money. हम ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, खास करके व्हाइट कपड़े पहनते हैं। तो सिंपल हमारा जीवन है, झंझट नहीं, क्या पहनना है वो सोचने की भी हमको जरूरत नहीं रहती है। And also Baba reminds us never take any law into our own hands. Even somebody make a mistake, don't punish them using our own way to punish them. The law will take care of itself. The law of karma will take care of itself. So we shouldn't take the law in our own hand, because by doing so, we are actually creating further karmic accounts with another soul. So, whoever do anything under the law, they will receive the consequences they have to face, and we don't have to take any law in our own hand. If it need to be reported, then we report to the police. Let the authorities take over or manage the matter. माना अगर हमको देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो एक तो हमको लॉ हाथ में नहीं उठाना है। बाबा ने वो कहा है कि उनकी इस दुनिया में चलना है तो युक्ति से भी हमको चलनी पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम उस अथॉरिटी को हम बताए, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस को बोलना है, जितना हमको कर सकते हैं हमको करना है, डिटैच हो जाना है, क्योंकि कर्म का जो फिलोसफी के है उसी आधार पर उनको पनिशमेंट जो मिलना है वो मिलेगा। And then the second point, Baba says, in order to establish the new kingdom, before destructions take place, give everyone the Father's message. And the Father says, remember me and your sins will be absorbed and you will become pure. तो बाबा कहते हैं विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। So actually Baba today's again remind us that remembrance is very important. In order to absorb our past sins, past accounts, the remembrance, the connection with him has to be very firm. So it is important that we keep this remembrance, always stay on the pilgrimage of remembrance, then only our sins can be absorbed. तो बाबा को अच्छे से हम याद करेंगे, बाबा के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा होगा, तो ही जो भी हमने जन्म जन्मांतर से पाप कर्म किए हैं उस भस्म हो सकेंगे। Yeah, I'd like to share about, there are 3 ways to how we remember Baba. The first one, sometimes we find we may not able to focus or pay attention fully in the remembrance. So sometimes we remember him, sometimes we don't remember. That means to say the connection is not constant, and sometimes we break in between. So sometimes we remember him, sometimes we don't. This is the first type of remembrance. या हम बाबा को एक कई प्रकार से याद करते हैं, उसमें एक प्रकार है बाबा को याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, ये एक प्रकार का याद है।
And then the second type of remembrance is what we call the natural remembrance. Some people, they say, oh, whatever I do, I always remember Baba, and it become very natural. So the second type is called natural remembrance. But then this type of remembrance also cannot absorb our past sin. Natural remembrance can absolve sins, no? Not intense, because if you, in order to really burn the past sinful act, we need to have a really intense and very deep meditation, long enough, like a fire of yoga, in order to absorb the past sins. So this natural means that Easy. better than the first one is still very easy, very light. So that also cannot actually absorb the past sins. तो दूसरे प्रकार से हम बाबा को याद करते नेचुरली, चलते फिरते घूमते फिरते, खाते पीते उठते बैठते बाबा बाबा करते रहेंगे, उससे भी बहुत डीप हमारे जो पाप कर्म है वो भस्म नहीं होंगे. So the third type is what we call the fire of yoga, remembrance in the fire form, where the love for God, and we have all the relationship with Him, develop all the relationship is so strong that it will burn the past sins from our तीसरा प्रकार का जो योग है वो Mm. बाबा जो कहते हैं ना ज्वालामुखी योग, एकदम जो हमारे विकर्म है वो भस्म हो सकते हैं. तो हमारा जो फोकस है वो तीसरे प्रकार का जो योग है उस पर होना चाहिए. But of course, this takes time to practice in order to have that kind of fire of yoga, which is very constant, long enough, and then with the 100% focus, then you need to have practice. हाँ, in इसके order लिए to बहुत achieve. प्रैक्टिस करनी है, बहुत मेहनत करनी है, तब जा करके हम तीसरे प्रकार से बाबा को याद कर सकते हैं ज्वालामुखी स्वरूप से. उसके आधार पर हमारे विक्रम जो है विनाश होंगे. Then today's blessing, every day, so nice. Baba give us blessing. Baba say, may you always be obedient and receive the tilak of success from the Father while seated on the heart throne. That means seated on his heart throne, and we receive tilak of success from him and follow his direction. Be obedient. आज का वरदान है बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव. So every day at Umbrella, so are they all have started the morning meditation, Umbrella? Slowly, yeah. Slowly, okay. Yeah. So every day at Umbrella means our early morning, our meditation usually is from 4 to 4:45. So later I will share, what is important of Umbrella, Yeah, later, how I once we started, finish, after I finish this, I'll share how I started my Umbrella and how it has benefited me a lot, that I also hope all of you also will receive the same benefit from this Umbrella. So Baba say every day at Umbrella, the Father, the bestower of fortune, gives the tilak of success to all his obedient children. भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं. Obedient Brahmin children cannot use the words hard work or difficult in their speech or even in their thoughts. आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं. They become easy yogis. वह सहज योगी बन जाते हैं. And so they never become disheartened. इसलिए वो कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनते हैं. But are always seated on the heart throne and are merciful. वो सदा दिल शिकस्त बनते हैं, बाबा के रहम दिल बच्चे भी बनते हैं. And they finish any consciousness of I or any feeling of doubt. They never have this I अहम consciousness. भाव और वहम भाव को समाप्त करते हैं. So meaning to say every day actually at Umbrella we receive free flow blessings from Baba, and throughout the day you find that you don't have to work very hard. You feel very light and you don't find anything is difficult. It doesn't mean that there's no challenges, but we will find that the challenges is nothing, because we have received a lot of power from Baba, a lot of blessing from him, so we are able to sail through the day. हाँ, जो अमृत वेले में हमने योग किया, बाबा से शक्ति ले लिया, तो सारा दिन वो पावर काम करता है. भले बातें आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो भी जो हमने पावर ले लिया सवेरे सवेरे बाबा से, वो पावर के आधार पर उस बात को फिनिश करके आगे जाना सहज हो जाता है.
So if we will finish our body consciousness, we do everything with soul conscious. So as a result, we never have any doubt, no any problem during the day. That's why you find that success is our birthright. Everything that we do, we only see success. Everything that we do, we achieve the results that we want. हाँ, हम अमृत वेले से लेकर के आत्म अभिमानी होकर सब काम करेंगे तो सफलता हमको हर कर्म में अनुभव होगा. Okay, today's slogan, do not think about the date of world transformation, but fix the moment of your own transformation. आज का स्लोगन है विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो. Because many times we ask Baba, when this transformation will happen, and the whole world will change. And then Baba says, then when you're going to change in the date of your transformation, because the world transformation could only happen when we change ourselves. When we change, the world only will change. So actually, it is in our hands. When we want to become complete, then only the world will transform. तो हम बाबा को पूछते हैं ना, बाबा विनाश कब होगा. आज ही मैं किसी से बात कर, टुडे ओनली आई वाज डिस्कसिंग दिस विद समवन दिस मॉर्निंग, बिकॉज़ सो मेनी बैड थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एंड तो आज ही मैं सवेरे बात को किसी से पूछ रही थी कि कब दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी गलत चीजें संसार में हो रही है. लेकिन बाबा कहते हैं वो नहीं सोचो, आप अपने परिवर्तन के बारे में सोचो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य हुआ ही पड़ा है. Om Shanti. So these are the some main points of the Murli. Okay, maybe next I would like to share about this Amrit Vela. When I first started more than 10 years ago. So I am very grateful to Baba. He know each and every one of us. And then he actually helped me in my progress. At each point of time, he will send some instruments like to guide me. Okay, now is the time. At first, I just go to the center in the evening for evening class. And that was only 2 times in the week, which is Tuesday and only Thursday they have an English class. So in the evening, I used to go there until one day, or maybe you want to translate? तो ये शुरू में जब सेंटर के कनेक्शन में 10 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर ट्यूसडे और थर्सडे के दिन, मंगलवार और गुरुवार के दिन इंग्लिश क्लास हुआ करता था. तो केवल हफ्ते में 2 दिन ये सेंटर जा पाते थे. When I listened, and it was actually a Murli revision, but each time when I listen, one word that extra loud to me, I always there's this word catch my attention, which is seva, service. I do not know why, but this word is very loud to me. Each time when I listen to the Murli, always seva come into my mind. तो जब भी मुरली सुनते थे, आज भी हमने मुरली सुना ना, बाबा सेवा या सर्विस के बारे में बात करते हैं, तो वो जो शब्द है इनको बहुत अच्छा लगता था, सेवा शब्द और सर्विस शब्द. So even though I was very new, so I was very curious to find out how could I do service, because I heard so much that Baba say you must do service, you must have mercy for others. So because of that, right, I actually wanted to know more, and then asked, is this the 2 days that I can listen to Murli, or I can actually listen to the Murli daily? I asked the teacher. तो इनको मालूम नहीं था कि डेली मुरली भी सुन सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने पूछा कि मैं क्या रोज मुरली सुनने आ सकती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 ही दिन जाते थे, इनको मालूम नहीं था कि डेली भी जा सकते हैं. तो इन्होंने पूछा कि क्या मैं डेली आ सकती हूँ मुरली सुनने के लिए. And then the teacher said, oh yes, sister, if you like it, you can come every day, but you have to come in the morning. तो उनकी जो टीचर थी सेंटर पर, उन्होंने कहा कि आप डेली आ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आपको सवेरे आना पड़ेगा, डेली आना है तो. So I say, okay, I will come daily in the morning. You let me know what is the time. Then because during that time, my lifestyle is such that I slept very late, so I couldn't wake up very early in the morning. And I try my very best. I make effort to go to the center for Murli class, but I was always late. Always about halfway through the Murli, only I will walk in, but still I receive something. तो इनको था कि ठीक है, मैं रोज आना चाहती हूँ, मैं सवेरे आऊंगी अभी मुरली वगैरह सुनने के लिए, लेकिन इनका जो वर्क करते थे अपना, यूज्ड टू डू योर लॉकी जॉब, ना. Yeah, because of lucky job, that's why I was not able to wake up very early, and then we always sleep very late. Sometimes we also
brought our work home, continue to work even at home. ओके तो ये जब इनकी जो लौकिक जॉब थी, जॉब करते थे वहां पर मलेशिया में, तो क्योंकि थक जाते हैं काम करके सारा दिन, रात को सो जाते तो जल्दी उठ नहीं पाते थे, जल्दी उठ नहीं पाते तो सेंटर को जल्दी पहुंच नहीं पाते थे, तो मुरली पूरा सुन नहीं पाते थे सवेरे के टाइम पे। So after a few weeks, Baba sent one sister. Suddenly, I know we were talking after the Murli class, and the sister was talking to me, and she started to share with me about Amrit Vela, about this morning meditation, because she also observed that I didn't have any meditation because I came in late. Meditation was over, and then I just finished the class halfway like this. So she was actually observing, and then she shared with me about Amrit Vela. तो तो एक बहन थी सेंटर पर, उसको इनको ऑब्जर्व कर रही थी कि रोज सेंटर पे जो है लेट आती है, मेडिटेशन मिस कर लेती है, मुरली भी इनका मिस हो जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए वो सिस्टर ने इनको अमृत वेला जो हमारा योग है मॉर्निंग का 4 से पौने 5 बजे तक, उस योग के बारे में इनको समझाया। And then the sister, what the sister said to me really interests me, because she told me, sister, if you wake up early in the morning to do the meditation, right, you will get powers free flow from God. You don't have to work hard. So long as you keep yourself alert and you don't have to worry, you just come into the gathering and sit with others, and that will help you to, make your effort easier. तो सिस्टर ने इनको समझाया कि अगर आप अमृत वेला योग शुरू करेंगे, आप अच्छे से बाबा को याद कर सकेंगे, बाबा से शक्तियां ले सकेंगे, फिर उसके बाद आपको, आप जो काम करते हो वो भी आपको सहज हो जाएगा, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे उन्होंने अमृत वेले योग के बारे में सिस्टर को समझाया। Of course, she encouraged me to go to the center for the Amrit Vela. In Malaysia, we actually allowed to go to center to do Amrit Vela together with the center wasis and other students. ओके, मलेशिया में जितने, हाउ मेनी सेंटर्स आर देयर इन मलेशिया सिस्टर? more than 50 हाँ, centers. मलेशिया में लगभग 50 से भी ज्यादा सेंटर्स है, तो हर सेंटर में उनका सिस्टम है, जिसको भी अमृत वेले का योग करना है मॉर्निंग 4 बजे भी सेंटर पर जा सकते हैं। तो इनकी जो टीचर थी, उनको उन्होंने यही समझाया कि आप चाहे तो 4 बजे सेंटर पर आ सकते हैं मॉर्निंग अमृत वेला योग करने के लिए। So for me, out of curiosity, I started to plan, okay, I should go there. And luckily, I brought my 2 nieces, that means my brother's daughters with me. And 3 of us were in knowledge. So I introduced the knowledge to them, and then I brought them to the center to do the 7 days course. And now, not only me, there are 3 of us, 3 Shaktis. Okay, where are they two? Where are they? They are still in Gyan, but they are not surrendered, so they still have their lucky job, and they now go to another center for the Murli class. Okay. तो ये जब जाना इन्होंने शुरू किया, इनकी भाई के 2 बेटियां थी, उनको भी सेंटर लेकर जाते थे, तो माना 3 हो गए ना, ये अकेली जाती थी, उसके बाद 3 हो गए। अभी भी वो लोग ज्ञान में चलते हैं और उनका लौकिक जॉब है, वो करते करते सेंटर पर मुरली सुनने जाते हैं। So because 3 of us, we are like in the team, and we cooperate, work with another. You say that just in case one of us get lazy or don't wake up on time, the other 2 will wake us up. So this is how we work together, and 3 of us went to the center for Amrit Vela from the beginning. तीनों मिल गए ना, एक अगर सो जाता है अमृत वेले में तो दूसरा उठाएगा, दूसरा सोएगा तो तीसरा उठाएगा। ये 3 बहनें थी, तो अगर कोई एक सोएगा दूसरे उठाते थे, ऐसे तीनों मिल करके सेंटर पर जाने लगे अमृत वेला योग करने के लिए। And then because we were in the center for Amrit Vela, we stay on until the Murli time. So from then onwards, we never late for Murli class. So what time you used to go to the center? 4 o'clock? Center by 4 o'clock. Yeah, 4 o'clock we went to the center. But because 3 of us, we go by car. We drove, and then center is only 5 minutes away from our house. So that's why 3 of us, we work as a team to help each other, that we must go to the center for Amrit Vela no matter what. And let's see how it will help us in our spiritual progress. तो ये तीनों ने मिलके प्रोग्राम बना लिया, मॉर्निंग 4 बजे सेंटर पर जाएंगे ही जाएंगे, तो उठ के तैयार होके तीनों कार ड्राइविंग करके सेंटर पर अमृत वेला करने जाते थे। अमृत वेला करके ऐसे मुरली भी सुन करके फिर वापस आते थे।
And then from there, we developed the interest in Murli class. Although we have not just studied any scriptures, nothing. So in the Murli, there are many terms are Hindi terms. There are about some stories in the scripture, some example which for us, we are a Malaysian Chinese. So it is not easy for us to really appreciate the Murli point. But whatever we could understand, we can accept, we just take it and apply whatever that we could. But majority of the Murli to us is like very strange to us because we don't know anything about the scripture, even talking about Ramayana story, who is Angad, who is this Hanuman and all that. तो ये जब शुरू में मुरली सुनते थे इनको बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि ये मलेशियन चाइनीज है, तो उनका सिस्टम अलग होता है, उनका कस्टम अलग होता है, जो सीखते हैं पढ़ते हैं बचपन से, पूरा इनका लाइफ बहुत डिफरेंट होता है। तो अचानक अंगद आया, हनुमान के बारे में बाबा मुरली में बोलते हैं, ऐसे कई कई चीजें जो मुरली में आ जाती है, इनको समझ में नहीं आता था और इनको बहुत विचित्र लगता था कि ये क्या है मुरली माना। But I would think that it's because of the umbrella that it has sustained us for long. Even we don't understand, but we keep going. We never stop going, even we don't really understand the whole Murli. तो ये जो अमृत वेले का योग करते थे उसके आधार पर ये ज्ञान में चलने लगे। भले इनको मुरली इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अमृत वेले का योग में जो अनुभव होता था उसके आधार पर ये ज्ञान मार्ग में आगे चलने लगे। Then sometimes, even like if one day, if I miss the umbrella, we will feel very guilty. We can feel the big difference when we go for umbrella and if we don't do umbrella, a very big difference. If we have the umbrella, we find the whole day we are able like to sail through the day, even then we face certain challenges, but we were able to manage it and we feel very light and happy. तो इनको धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि अमृत वेला करके अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो उसमें कैसा रहेगा, अगर विदाउट अमृत वेला मिस करके अगर हम दिन चलाते हैं, दिन में चलते हैं, तो उनको वो फर्क अपने आप महसूस होने लगा। And then one day Baba sent another angel to help us in the Murli. So one sister, we were sitting on the front row. Even we don't understand, we always sit at the front row. And one sister sitting towards the end of that first row, she has been also observing us. And then one day she just walked to us and said that, "Sister, are you free on Saturday? I would like to show you one video about Ramayana story. And I could sit with you, explain to you all the characters that Baba used in the Murli, so that next time when you listen to the Murli, you will understand what it means and then why Baba used those examples." तो इनको था कि इनके दूसरे एक सिस्टर थी, उन्होंने बोला कि आप सैटरडे फ्री हो तो आप मेरे से मिलो, मैं सारा जो रामायण है उसके बारे में मैं समझाऊंगी आपको, और रामायण में जो कैरेक्टर्स आते हैं जो बाबा मुरलियों में बताते उसके बारे में भी मैं समझाऊंगी आपको। So since then, we were able to really understand, appreciate Murli much more than before. Then next, Baba also gave me an opportunity to do translation because of I understand Mandarin. I can speak Mandarin, Chinese language, and also I can understand English. And at that point of time, there was shortage of translators. Even though I was very new, I was approached to help in the translation. Of course, at the beginning, I was very afraid that if I translated wrongly, would I have karmic accounts or not? तो इनको क्या हुआ, मैंड्रिन करके एक लैंग्वेज है वो भी इनको आता था, तो इनको कहा गया कि वह ट्रांसलेशन करने वाले नहीं हैं आप उस भाषा में, क्योंकि आप सोच नहीं सकते हैं बाबा की जो सेवाएं बहुत भाषाओं में चलती है, इतनी भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है, तो इनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया कि आप भी ट्रांसलेशन करो। तो ये सोचने लगे कि मुझे ही इतना ज्ञान अभी पता नहीं, मैं ट्रांसलेशन करूंगी तो गलत तो नहीं हो जाएगा। So I actually checked with senior, but the senior, he answered me in very tactful manner. He said, "At least you have the courage to do the translation. You always have to start from somewhere." But he never said that you won't have any karmic account, you translated wrongly. So I understood very well that if I didn't do it properly, there will be karmic accounts. That I was very clear internally. तो एक भाई ने इनको बताया कि कोई बात नहीं, आप ट्रांसलेशन करो, करते करते अब सीख जाओगे, तो थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती है तो कोई बात नहीं।
So before I accepted this role, I started to read the Murli, the old Murlis. I started to take those past years Murli and read along with the Chinese translation so that I will learn how they translate and so that I will be more accurate in my translation. तो जब इनको ट्रांसलेशन की सेवा मिली तो अच्छे से इन्होंने सीखा समझा, ताकि इन्होंने सोचा कि अगर मैं अच्छे से सीखूंगी तो अच्छे से ट्रांसलेशन की सेवा दे पाऊंगी. So I would say that my recognition for Baba, I didn't have any vision, nothing, but my recognition is actually through Murli, through the knowledge itself that I begin to recognize Baba. I could feel that Baba is like speaking to me personally as I was reading those past years of Sakamulis, even Avyat Murli. Many people are actually very afraid to translate Avyat Murli. They say that that is not an easy task. But I took it up as a challenge and I started to read a lot of past years Murli. तो इनको एक्चुअली एग्जैक्टली बाबा के जो ज्ञान में अट्रैक्ट किया वो मुरली ने ही किया, साकार मुरली को, और इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया. तो अव्यक्त वाणियों को दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी इतनी गहरी बातें बाबा उसमें सुनाते हैं. तो लेकिन इन्होंने वो चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और अव्यक्त मुरलिया भी इन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू किया. सिस्टर सुसन, हाउ यू केम टू बाबा, दैट कैन यू शेयर दैट पार्ट? Oh, What attracted you? Because in fact, I was actually searching for happiness and also peace. In fact, I always like remember that I was once very happy, and what happened to me now? I wasn't happy. I was searching for many ways in order to make myself happy. And then what happened is that every morning I will look into the mirror and I will motivate myself. I say, I am positive. I am very happy, always daily. But what happened is that when I go to work, before end of the day, I was totally exhausted. तो ये यूजुअली ज्ञान में आने से पहले खुशी और शांति के लिए ढूंढ रहे थे. अपने आप को कहते थे कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ. लेकिन जब सारा दिन जॉब करके घर वापस आते थे तो थक जाते थे यूजुअली. माना ये हमेशा इन्होंने खुशी और शांति के लिए ढूंढ रहे थे. And I spent a lot of money attending the motivational courses. I actually, fork out my own money. I took leave. I went for motivational courses. And I was told that in a year, you at least have to attend 4 times of this kind of seminar in order to keep yourself charged throughout the year. I was told that you at least have to attend 4 in a year. So, but based on my experience, it cannot last me for 1 year, not even 1 day. After the seminar, the next day, when I went back to the office, because I was the only one charged up, I was the only one motivated. But all other my colleagues, they never attended the same seminar as me. Their negative energy, it drains me. So my positive energy, it doesn't last long. Even maybe half a day is finished. तो इनको ऐसे अनुभव होता था कि बाहर के रिट्रीट्स में जब जाते थे ना तो अच्छा तो लगता था, लेकिन वापस अपने काम पे आते थे, वापस वही टेंशन, वही स्ट्रेस, वही टाइम प्रेशर वगैरह वो करते 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 वापस वही जैसे हो जाते थे जैसे पहले थे. हमेशा वो लॉन्ग टर्म तक तो उनका जो वहाँ अनुभव होता था रिट्रीट में वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता था. वापस वही दुख का अनुभव, वापस वही लो फील करते थे. खुशी और शांति जो ढूंढ रहे थे वो उनको मिल नहीं रहा था. Until I come into the knowledge. Then through the meditation, I realized that this is the way that to sustain my energy. It has to be a daily and you need to have a timetable. You need to be consistent. You need to have determination. And if we do follow the timetable, we follow the meditation plus this knowledge. It is not just keeping our mind blank and meditate. No, it is actually a knowledge base. And I was very hunger for knowledge. That even one day, there was one day I bought 20 books and I spent whole day just reading the books only because I was searching for an answer how to sustain myself daily positively without getting down emotionally, very stressed up and all that. I couldn't find a ultimate solution. There's no solution. I couldn't find anything in the books. तो ये ज्ञान में आने से पहले बहुत ढूंढते थे ज्ञान को. 20 इन्होंने किताब खरीदे थे और वहां पर भी ढूंढ रहे थे कि ज्ञान शायद मुझे इसमें खुशी शांति मिले. जब तक ये बाबा के ज्ञान में नहीं आए तब तक इनको खुशी और शांति का अनुभव नहीं मिला. हाउ यू केम टू नॉलेज, लाइक हु, लाइक
Somebody exactly. actually, it is true of my niece friend, one of the friends. I actually met him in his house. What attracted me was his face. It looks very serene. He looks very serene, and out of curiosity, I asked him, and he just said, "Okay, I just came back from Raja Yoga Center. I wanted to bring my sisters to take the 7 days course." Then I look at him. His serenity really attracted me, and I asked him, "How long have you been meditating?" At that time, it was 8 years. He has been meditating for 8 years, and then and I asked the next question: "Is this the outcome of your 8 years of meditation?" He said, "Yes." I like the results. Actually, I like the way he's very serene, very peaceful, and I see myself. I should be like this. So that's how I got the number from him, and I go to the center myself and ask to take the 7 days course. हाँ, तो इनके फ्रेंड के एक भाई था, उनसे एक उनके घर पे मिले एक बार, तो भाई का जो चेहरा था, वो चेहरे पे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे। तो बाबा कहते हैं ना, चेहरे से सेवा हो, तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे। तो भाई को इन्होंने पूछा, आपका चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा, मैं अभी योग करके आया हूँ, मेडिटेशन करके। तो इन्होंने कहा, मुझे भी सीखना है, तो करके ऐसे उसके द्वारा ये फिर ज्ञान में आए। So that's how I started to come in contact with Brahma Kumaris and started the meditation. So what I like is the system from umbrella. We set the foundation for the day, and then before we started our day, we feed the soul. I never do that. I never knew that I was a soul. I never feed the soul. So for so long, that's why it's actually thirst for knowledge. Later I understood. Then daily I just follow the timetable. So actually in Baba's system, I'm very grateful that I don't have to do anything. I simply had to follow the system and I will achieve the result like that brother, that the model that I saw at the beginning. तो इनको यहाँ के जो बाबा के घर में ब्रह्मा कुमारी इसमें जो सिस्टम है, मॉर्निंग अमृत वेले से लेकर के सारा दिन, इनको सिस्टम सब बहुत अच्छा आया, ज्ञान अच्छा लगा, मेडिटेशन अनुभव होने लगे, वो अच्छे लगने लगे, तो सारी बातें इनको अच्छे लगने लगे, तो ज्ञान में चल पड़े। So then from there, I noticed that because I have been attending the Murli class, my meditation also gets better. And the concentration also improves because of listening to the Murli. And because in Malaysia, right, we are not allowed to have any hard copy in our hands. We have to sit and listen to the Murli class and then we take note. Only those who need to revise, also we only read the Murli in the center. We are not allowed to take away the copies. So because of that system, I find that I developed that power of concentration. First time, I only get very few points. Like the more I listen to it, I can actually extract more points from the Murli itself. या तो मलेशिया में एक सिस्टम है कि आपको मुरली अच्छे से सुननी है, उसको पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, तो प्रिंटेड कॉपी आपको नहीं मिलेगी। तो उसके वजह से क्या हुआ, अच्छे से मुरली सुनते थे, कंसंट्रेशन से सुनते थे, लिखते थे, तो इसकी वजह से इनको मुरली की गहराई में जाना सहज हुआ। So I also learned that, before I come for umbrella, I always late for class. Remember, I never have any meditation. But because now with this umbrella, and I stay back for the Murli class, I never miss the half an hour meditation before Murli class. And then the sisters actually share with me that during that half an hour meditation, you are actually sitting in soul conscious. So when the class start, you will listen in the soul conscious and you will able to have experience that it is God. This is the bodiless God. It is not a human being. The one who's reading the Murli is merely an instrument. And this is actually something very unique compared to the schools in these worldly schools. It is the Supreme Soul who doesn't have a body of his own, but through that representative, through the instrument, is actually speaking to me. I am a soul, and it is I, the soul, I'm studying, not the ears, not my eyes, but it is the soul that is learning. So that half an hour meditation actually prepare me to listen in that soul consciousness. And with that, right, I find that my intellect softened. It's like a sponge. I was able to absorb the knowledge better than before. And then my concentration power increases because of listening to the knowledge.
तो यहाँ पर विदेशों में हमारे जितने भी सेंटर्स है वहाँ पर एक सिस्टम है, आपको मुरली सुनने के आधे घंटे पहले योग करना ही है। तो इन्होंने कहा जो मुरली के पहले आधे घंटे का योग हम करते थे, तो उस योग के वजह से मैं आत्मा हूँ, उसका अभ्यास अच्छा होने लगा और मुझे पढ़ाने वाला भी निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी बॉडीलेस है, परमात्मा भी, उसका अपना शरीर नहीं है, वो भी अच्छे से अच्छा अनुभव होने लगा। तो इसीलिए मुरली के पहले योग करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से इनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी अच्छे से डेवलप होने लगा। So when I'm able to meditate better, and when I listen to the Murli, I can absorb even better. So I understand that it has to go hand in hand. It cannot be only listening to Murli and no meditation. I also cannot just meditate and not listening to the Murli. जब मुरली सुनना है तब मुरली सुनना है, जब मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करना है, मिक्स नहीं करनी है। तो प्रॉपर सिस्टमैटिकली जब हम योग करते हैं, जब हम मुरली सुनते हैं, उससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। And not only that, through the Murli, it answer a lot of my questions, because I used to have a lot of doubts and some question in my mind, and also about religion, and all will be explained in the Murli class. And from there, I feel that I'm lighter and lighter and less waste thoughts, and then I have more faith. So that's how I can find myself that progress faster than before. तो देखिए, ये जो ज्ञान है तभी क्लियर होगा जब हम मुरली को सुनेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, लिखेंगे। तो इनका यही कहना है, इनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति, जो बाबा मुरली में बोलते, कई सारे प्रश्न थे इनके मन में भी। तो सारे जो प्रश्न जैसे 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 मुरली सुनते गए, गहराई में जाते गए, तो सारे जो क्वेश्चन है धीरे 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 सभी प्रश्नों का उत्तर इनको मिलता गया। So until today, I never miss any Murli. Of course, after moving to the ARC, it's even better because of we have a group umbrella collective, even bigger group, and also we because of Mira Didi, we will make to follow the timetable and also be very punctual for Murli class, for umbrella, for each and every section of the meditation, even evening meditation, and of course, I really appreciate the discipline. Because of that, it helps me a lot also. I could see that 6 years living in the ARC compared to the 8 years before I live in the center, such a big difference, such a fast progress that we're making. तो ये जहाँ पर रहते हैं एशिया रिट्रीट सेंटर, उसकी फोटोज हम दिखाएंगे आपको। तो एशिया रिट्रीट सेंटर जहाँ पर रहते हैं वहाँ मेरा दीदी रहती है। तो दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, अमृत वेला प्रॉपरली संगठन में करना है, मुरली सुननी है, शाम का भी योग करना है। तो ये सब जो सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है, सिस्टम को फॉलो करने से इनको लगता है कि मेरे में बहुत प्रोग्रेस आया, बहुत मैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ। And because of the power of the gathering, yeah, it is very important that we also do it together. And of course, you do have time for self effort and all that, to revise the Murli, to really the most important thing is whatever that we learn from the Murli, we have to put into practice, imbibe it. Otherwise, it's just like another theory, a piece of information. It doesn't have the power. Knowledge will become a power when we actually apply it in our daily life, and then we benefited from the application of the knowledge. Then only we will really see that it transform our sanskara, will be transformed, our character, attitude will be changed. तो इनका ये कहना है कि ज्ञान जो हम सुनते हैं वो रेगुलरली हम अच्छे से सुनते रहे और उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें, तब जाकर के हमको ज्ञान का मजा आएगा। बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, उसको मुझे कितना प्रैक्टिकल अपने लाइफ में धारण करना है। तो ये सारी बातों को जितना 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 हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, उतना 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 हमको ज्ञान में मजा आता जाएगा। Sister Susan, there are so many new students who joined with Baba since a month now. So what suggestion, what guidance would you like to give them so that they recognize Baba accurately and move forward, go ahead? Because yeah, right now they cannot come to center, right? They no. not allowed. The center is not open. But I mean, it's okay. You can if you cannot come to the center, even in Malaysia, we also sustain students like you through this online
what you call Murli class as well. This is a very good way of sustaining ourselves, and especially daily. I can share with you that I do with a group of a Chinese student, Chinese speaking student. Now, one of the students, right, she used to go to the center, or like me, also in the evening, only for 2 times. Ever since lockdown, because of the COVID virus lockdown, she followed the online class daily because now she can just log in daily. And she shared that she can experience such a big difference. She feels, because when the COVID virus incident happened, she felt so, she had fear, she had a lot of worry, uncertainty. And then because of that, she joined the meditation, she come for the Murli class and all that. And today, so she shared that now I feel very safe. I have no more fear. I have no more worries because Baba is me. She can experience Baba because of daily. She just have to log in because through the online, you will also able to experience that vibration. You can also, through meditation, through the listening to the class. You see, Murli, every version are pure thoughts, right? Each time when you listen, no matter whether it is a little knowledge or how long is that you're listening to, we are accumulating. And the more we accumulate all these pure thoughts, right, you will find that your positive energy, you will have a higher vibration, and you were able to go beyond all this negative vibration surrounding. So you suggest them to listen to Murli every day? Yes, if Yeah. possible. For us, at a start, I also do like we just read the main points, essence for Dana, and all that, and then we finish within half an hour. Yeah. Okay. And then later, slowly, they begin to have the interest. Yeah. Probably Okay. also because of the group. And now we actually read the whole Murli to the students. With some explanation, so almost an hour. And then what happened is that we can see that they actually log in daily, never fail. So they begin to have that interest, have more faith in Baba. And then now also in the evening, we revise the Murli in the morning, and in the evening, we have actually a meditation session with those who really keen to want to progress, to learn how to meditate. We meditate with them. We Okay. share Yeah. some tips, and then we actually play the commentary. We actually sit with them and meditate. ओके लेट मी Mm, ट्रांसलेट। तो मैंने mm. इनको क्वेश्चन पूछा कि जितने भी नए लोग जो बाबा के साथ जुड़े हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे। उन्होंने यही बोला जो आपने सीखा है, कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, इसको आपको कंटिन्यू रखना है, डेली आपको ये करना है, मिस नहीं करने। जैसे उन्होंने एक सिस्टर चाइनीज में क्लास कराती है, चाइनीज में मुरली सुनाती है दूसरों को सिस्टर जो है। तो उन्होंने कहा एक चाइनीज स्टूडेंट है, उन्होंने इनके साथ अनुभव शेयर किया कि लॉकडाउन के टाइम पे जब कोरोना आया, कोविड वायरस आया, मैं बहुत डर गई थी। लेकिन ऑनलाइन में जैसे मेडिटेशन में मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसे करते 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 अभी मेरा मन का डर खत्म हो गया है, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो इनका यही कहना है कि जो आप कर रहे हैं इसको कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा, तब जा करके इसका बेनिफिट मिलेगा। मिस करेंगे, जैसे तैसे करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, उसका बेनिफिट पूरा नहीं मिलेगा। या So maybe if they have any questions they want to ask, या just now is ओके, alright. किसी के कोई क्वेश्चन है तो सिस्टर से पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे देश में ज्ञान वगैरह फॉलो करना बहुत इजी है। ऐसे देश में जहाँ पर ना भक्ति है, ना शिव को जानते हैं, ना किसी को जानते हैं। आई थिंक यू नॉन वेजिटेरियन बिफोर कमिंग टू ज्ञान? Yeah, I will. सिस्टर सुसन unmute. Okay. Yeah. Can you hear me now? Yeah, yes, Okay. yeah. So I was non-vegetarian at the beginning, and then there was one group, they came back from Madhuban. So they were sharing their experiences in Madhuban, and I was inspired and I wanted to go. So I asked. Then they say you have to be a vegetarian at least for 8 months, and I make that we set the goal. Okay, this year within 8 months we must go to Madhuban, and the next day I'm vegetarian until today. देखिए
हम लोगों को ज्ञान वगैरह फॉलो करना इजी है, ऐसे देश में रह करके इनको नॉनवेज खाने की इतनी आदत होती है, वो फिर भी ये सब धारणाओं पर अभी चलते हैं। और मेरे जैसे समर्पित है बहन सेंटर पर, जो एशिया रिट्रीट सेंटर है हमारा मलेशिया में, वो रिट्रीट सेंटर पे संपूर्ण रीति समर्पित होकर के सेवा कर रही। तो ये जो ज्ञान है ऐसे ऐसे लोगों में अगर परिवर्तन ला सकता है जिनको ज्ञान का ग भी पता नहीं होता है, तो न भक्ति, न शिव, न पूजा, न पाठ, कुछ नहीं मालूम होता, इनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग होता है। तो ऐसे लोग अगर बाबा के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोग अपने लाइफ परिवर्तन करते हैं, सारी धारणाओं पर चलते हैं और समर्पित हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्ञान में शक्ति है। तो इसीलिए बहुत एक स्पेशल आत्मा आज हमारे बीच है। तो किसी के कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। Is there anything they want to ask? Any question किसी they का have? कोई क्वेश्चन है मैसेज डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं डायरेक्ट। नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। No question. जनरली उनका किसी का क्वेश्चन, वन सिस्टर आस्क्ड अ क्वेश्चन, सिस्टर कैन यू सी इट? आई वुड लाइक टू नो व्हाट पीपल generally worship in Malaysia. What worship they do? They worship Shiva or Ganesh or Hanuman? Oh, various. Some Shiva, various types of worshipping. A very mixed. In Malaysia, we also have Buddhism, but because in Malaysia we allow individual to have their I think the whatever religion, like me, I was a Buddhist, and then Oh, you're a Buddhist. I was a Okay. Buddhist. I was a Buddhist. I learned close eye meditation. I went for the Buddhist retreat, so I have done a lot because I was searching, find ways how to have peace and have to be happy. And then in Malaysia, even the local, there are many. They have different deities. You name it, we have. Very much like India. We Malaysia very much like India. We worship a lot of different deities, तो different beliefs. मलेशिया में बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है, कोई बहुत सारे देवता है वहाँ, हनुमान है, गणेश जी है, देवियाँ हैं, बहुत सारे देवता हैं। सिस्टर सूसन जो है, इनका नाम सूसन है, तो ये पहले बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म फॉलो करते थे, बहुत सारे वहाँ पर भी रिट्रीट अटेंड किए, भगवान को ढूंढ रहे थे। तो जब बाबा मिला, परमात्मा मिला, इन्होंने संपूर्ण रीति से अपना जीवन समर्पित करके वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। I never thought that I would be, one of the members of the Brahma Kumaris. ये It कभी just नहीं happened. इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी एक दिन ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, सेवाएं करूंगी, इन्होंने कभी नहीं सोचा था। इनका भाग्य था, बाबा ने इनको चुन लिया और बहुत सेवाएं करते हैं वहाँ रिट्रीट सेंटर में, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क संभालते हैं। I just share last experience before we end the session. Yeah. The first year when I was in Madhuban, I met a sister who is a scientist. She is a scientist. She is from another foreign country, not from Malaysia. And she has been in knowledge for more than 10 years. And then and she was not well, and I was sharing with her vitamin C. And because of that, she shared with me. She said, "Sister," she called me Sister Susan, "you don't be like me. Don't spend time analyzing the Murli. I have spent 10 years analyzing the Murli classes, and now my conclusion is this cannot be done. This Murli cannot be spoken by human being. It is God that is speaking." She said that I have spent 10 years analyzing, and now I hope that you don't, like me, spend too much time, waste your time, and trying to really prove that this Murli is actually spoken by God and not by human being. तो इनको And एक that gave me, सिस्टर इनको एक सिस्टर मिली जब ये मधुबन आए थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मुरली में आप ज़्यादा एनालाइज नहीं करो, शुरू के दिन है तो अच्छे से मुरली सुनो, समझने की कोशिश करो, लिखो पढ़ो, मुरली को अच्छे से गहराई में जाओ और निश्चय रखो कि ये परमात्मा द्वारा ही सुनाए जा रहे महावाक्य है। So even though I was accountant, we used to, very, very good in analyzing then and all that. Yeah. But because of that, I keep a very plain intellect, especially listening to Murli class, and really, understand and catch the vibration. It is not the words; it is the vibration behind what Baba want us to do. What is he trying to tell us? What is the intention
of the words spoken. So from there, right, I really grateful that Baba sent different angels coming to me at different point of time to guide me along this spiritual path. So I really feel that his sustenance, his love, power, peace. And now this is the biggest, the best decision I make in my life, that I come in onto this spiritual path. And now I, if I need anything, I have Baba with me. So I don't have anything to worry about. I can be very carefree. And really thank you, Baba, for also giving me tonight this opportunity to be able to share with you, to interact with you. I never thought that one day I have this chance. Even Baba in the Murli says, serve Bharat. So I was thinking, how do I serve Bharat? And then I received this message from Sister Shavita, and requesting whether if I could share something with all of you. So instantly, instantly I say yes. It's only a matter of timing. Also, which day that I could make it, and also I will thank everyone for giving me this opportunity, and thank you for listening so patiently, so attentively. Thank you, thank you, Baba. तो इन्होंने कहा कि मुरली माना एक वाइब्रेशन है, मुरली माना एक शक्ति है, केवल वर्ड्स नहीं, उसको हमको अनुभव करना है। और इनका हमेशा संकल्प रहता था कि मैं भारत वालों की भी सेवा करूं। ये सोच स्थिति में कैसे करूंगी, लेकिन इनको ये अभी मौका मिला आप सबसे मिल करके, आप सबको ज्ञान सुना करके, आप सबसे शेयर करके मुझे भी बहुत महसूस हो रहा है। बाबा को थैंक्स जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। ये भी बहुत खुश है आप सभी से मिलके, और आप सभी भी इनसे मिलके खुश होते ही होंगे, क्योंकि देखिए कहाँ मलेशिया, कहाँ फॉरेनर, कहाँ उनका लाइफस्टाइल, कहाँ से कहाँ बाबा ने रत्नों को चुन करके एक माला बनाया है, और बाबा के कार्य में सब सहयोगी बन करके चल रहे हैं। तो हम भी खुश, तो सिस्टर सुसन भी बहुत खुश है। So my good wishes to all of you, and may you also progress in the very fast speed and flying, not walking right now, flying stage. तो इन्होंने कहा कि अभी पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति से आगे जाना है, बाबा को अच्छे से पहचानना है, बाबा को पकड़ना है, जो कुछ भी चाहे बाबा से मदद लेना है। अभी उड़ने का टाइम है, चलने का नहीं है, दौड़ने का नहीं, उड़ने का टाइम है। जल्दी 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 फास्ट हम सभी को पुरुषार्थ करना है। And you can do it. हाँ, और आप सब कर सकते हैं। आप सब में वो एनर्जी इनको महसूस हो रही है, तो इसीलिए आप कर सकते हैं। करके आप में उमंग उत्साह भर रहे हैं। Om Shanti. Didi has come to thank you. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Okay, Sister Susan, I'll once you log off, I'll show them the photos of the retreat center, then Okay. we will end. Yeah, okay. Yeah. So I will leave now. Yeah, 1 minute Okay. of silence and then Yeah, leave. yeah. सभी इनके वाइब्रेशंस का आनंद लेंगे, दृष्टि लेंगे, 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी रिट्रीट सेंटर का, फिर हम पूरा करेंगे। Okay, thank you very Om much. Thanks, Baba. Shanti. Om Thank you, Shanti. Baba. Om Thank you, Shanti. अभी सबको 2 मिनट में हम रिट्रीट सेंटर की फोटोज दिखाएंगे, फिर हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे फोटो को शायद आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना, ये रिट्रीट सेंटर का रिसेप्शन एरिया है। हाँ दीदी, ये दिखाई दे रहा है। अभी 1 सेकेंड, स्टॉप शेयर, एक फोटो को शायद Nice. ये दिखाई दे रहा है। ये रिट्रीट सेंटर है हमारा मलेशिया का। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? हाँ जी।
हाँ जी, ये रिट्रीट सेंटर है मलेशिया का, जहाँ से बहन ने अभी बात किया हाँ ना, जी। वही अंदर कहीं बैठकर उसने बात किया है। ये बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है हमारा वहाँ मलेशिया का। एक सेकेंड, एक क्लास हॉल दिखाते हैं। क्लास हॉल है वहाँ का, दिखाई दे रहा है? बहुत ये अच्छा। वहाँ का क्लास हॉल है, इसको डायमंड हॉल ठीक। कहते हैं वो लोग। देखिए कितना बड़ा क्लास हॉल है। ऐसा है, बहुत अच्छा है दीदी। हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा। फिर ये भी क्लास हॉल का, एक सेकेंड, ये क्लास हॉल का दूसरा एक व्यू है, पीछे से इन्होंने लिया हुआ है। और एक एक छोटा सा सेमिनार हॉल है, छोटे छोटे, जहाँ पर कोर्सेज प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। और डाइनिंग हॉल दिखाती हूँ, एक मिनट। डाइनिंग हॉल, हाँ ये वहाँ का डाइनिंग हॉल है। देखिए कितना साफ सुथरा है, हम गए थे, कितना यहीं सा- बैठकर हमने खाना खाया है। तो ये रिट्रीट सेंटर है वहाँ का। कार पार्किंग एरिया है, एक मिनट। ये कार पार्किंग, बाहर इतनी जगह है रिट्रीट सेंटर के बाहर, जहाँ क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में कार पार्किंग वगैरह फॉरेन बहुत कंट्री सिस्टमेटिकली बहुत। करना पड़ता है, इसीलिए कार पार्किंग, देखिए ऐसे कार पार्किंग है। आई थिंक दूसरे एक रिट्रीट सेंटर का दूसरा फोटो है, ये रिट्रीट सेंटर बाहर से ऐसे दिखता है। ओके, तो सभी आज मलेशिया घूम कर आए, बाबा ने सभी को मलेशिया घुमाया, तो बहुत मज़ा आया होगा, आई रियली होप। बहुत मजा। तो बाबा जो प्राप्तियां करा रहा है उसकी याद में रहना है, मज़े में रहना है। थैंक यू वेरी मच। एंड कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। हैव अ गुड इवनिंग एंड ऑल्सो गुड नाइट। और शांति दीदी।